Hello everyone, Kavita here from English Studio. So today we are discussing next reorders. The first one is heart attack. The clot in the blood vessel with the blood flow. The clot in the blood vessel. When the clot is formed without the normal blood flow, heart attack is caused by the sudden blockage of a coronary artery by a blood clot. So this is our first sentence. सो मेन कीवर्ड क्या है हमारे यहाँ पर हार्ट अटैक इज पोज्ड बाय हार्ट अटैक क्यों होता है क्या कारण है सडन ब्लॉकेज ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी बाय अ ब्लड क्लॉट द क्लॉट इन ब्लड वेसल विल ब्लॉक ब्लड फ्लो दिस इज आवर सेकंड सेंटेंस हमने पहले भी किया है आर्टिकल रूल ब्लड क्लॉट अ ब्लड क्लॉट द क्लॉट इट मींस कि जब आपका आर्टिकल रूल जो होता है ए एन आपका दा में कन्वर्ट हो जाता है या फिर किसी भी सेंटेंस में क्लोट है और नेक्स्ट में दा क्लोट है तो इट मींस वो सेंटेंसेस साथ में आएंगे सो द क्लोट इन द ब्लड वेसल विल ब्लॉक ब्लड फ्लो when the clot is formed it will stay in blood vessels when the clot is formed again clot की बात है कि जब clot form होता है it will stay in blood vessel तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा किस चीज के बारे में होगा ब्लड वेसल के बारे में clear this is a third sentence then without the normal blood flow जब एक normal blood flow नहीं होता है it will cause muscle contraction so our first sentence is 4 then 1 then 2 and then 3 let me repeat it again heart attack is caused by sudden blockage in the coronary artery by a blood clot then when the clot is formed it will stay in blood vessel then the clot in the blood vessel जो clot होता है blood vessel में will block कर देता है blood flow को without the normal flow it will cause muscle contractions normal blood flow जब नहीं होगा तो क्या होगा it will cause muscle contraction so next for example in dash repeating a variety of language in some areas the standard chosen may be variety that originally had no native speakers in the country so यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है in some areas कुछ areas हैं जहाँ पे native speakers क्या होते हैं country में a variety that originally had no native speakers originally कोई भी native speaker नहीं होता है जहाँ पर For example दिया हुआ है in paper engineer a lot of official business is conducted in Tokpisin जो प्यूपा में क्या किया जाता है जो ऑफिशियल बिजनेसेस है वो किस में कन्वर्ट किए जाते हैं टोकपिशन लैंग्वेज में किए जाते हैं सो दिस लैंग्वेज जो ये लैंग्वेज है इज नाउ यूज्ड बाय ओवर अ मिलियन पीपल but it began many years earlier as a kind of contact language उस टाइम क्या कहा जाता था इसको कॉन्टेक्ट लैंग्वेज लाइक अ पिडगिन पिडगिन क्या होता है जब हमारी नेटिव लैंग्वेज कुछ और होती है और बिजनेस हम किसी और लैंग्वेज में करते हैं दोनों ही लैंग्वेज के मिश्रण से जो एक थर्ड लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज जो बनती है दोनों के मिश्रण से उसको पिडगिन कहा जाता है जिसमें एक की वोकैबुलरी होती है और दूसरे का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सो नेक्स्ट a pidgin is a variety of language for example English that developed for some practical purpose such as trading means vyapar among group of people who had a lot of contact but who did not know each others language बहुत सारे contacts होते हैं but एक दूसरे की language को नहीं जानते हैं so our first sentence is third one then first then fourth one and then second let me check in some areas the standard chosen may be variety that originally had no native speakers in the country. For example, in Papua New Guinea, a lot of official business is conducted in Tok Pisin. Then this language, Tok Pisin क्या एक language है? This language is now used by over a million people, but it began many years earlier as a kind of contact language called Pidgin. Pidgin is a variety of language that developed for some practical purpose, such as trading, among group of people who had a lot of contact but who did not know each other's language. Japanese girl.
if this opportunity, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, I don't know. However, again पहले नहीं आएगा. People want to keep working hard. लोग कब तक काम करते रहेंगे working hard? Only if there are opportunities for promotion. जब तक promotion होता रहेगा तब तक hard work करते रहेंगे. So number of staff who wish to turn up and do a simple job. कहते बहुत सारा स्टाफ होता है जो who wish to turn up, कुछ तो turn up करना चाहते हैं and do a simple job and go home is relatively happy if they believe their work is secured. अगर उनको लगता है उनका वर्क क्या सिक्योर है तो वो क्या है, सेम जॉब पे आए, काम किया, घर चले गए और रिलेटिवली हैप्पी रहते हैं. नेक्स्ट, people want, however, any employee who wants to acquire more varied and responsible duties. लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि वो ज्यादा वरीड जॉब करे, acquire more varied and responsible duties, will not feel satisfied for a long staying with the same and boring job. वो सेम और बोरिंग डेली बेसिस पे वही जॉब पे आए, काम किया, घर चले गए, तो इट मीन्स उनको वो चीज पसंद नहीं है. सो दे नीड समथिंग एल्स. सो द सेम एंड बोरिंग जॉब पे वो लंबे टाइम तक नहीं स्टे कर पाएंगे. देन पीपल वांट टू कीप वर्किंग हार्ड. लोग उस टाइम तक ही वहां पर वर्किंग हार्ड करेंगे जब तक उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन के लिए. Then next, if this opportunity does not exist, अगर वो exist नहीं करती opportunity, they are most likely to be demotivated. फिर वो काम से demotivate होना start हो जाते हैं. So number of staffs who wish to turn up and go do a simple job and go home is relatively happy if they believe their work is secure. However, any employee who want to acquire more varied and responsible duties will not feel satisfied for long staying with the same and boring job. People want to keep working hard only if there are opportunities. Yes, अगर opportunities हैं promotion के लिए तो वो challenging job को भी करने के लिए तैयार है. If this opportunity does not exist, अगर कोई opportunity ही नहीं है, they are most likely to be demotivated. A requirement of humanities. A requirement of humanities 104 is to write a persuasive paper on a topic of your choice. Humanities 104 क्या है, persuasive paper है जिसमें हम टॉपिक अपनी चॉइस से लिख सकते हैं. That is our first sentence. Next, the final draft. No, टॉपिक की बात है यहाँ पे. A topic. Next, the topic. Yes, this is our second sentence. You choose should be supported by a range of sources. जो टॉपिक हम चूज करें उसमें क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ सोर्सेज होना चाहिए. तो रेंज ऑफ सोर्सेज प्लूरल टू सिंगुलर, द सोर्स मींस कि रेंज ऑफ सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट हमने कौन सा चूज किया, इट मींस वो स्पेशल है. तो द सोर्सेज शुड बी साइटेड अंडर APA guidelines and the final draft should be written by APA styles. So final draft, again final draft is due one week before the final exam. This is our third sentence and this is our fourth sentence. Let me check it again. A requirement of Humanity 104 is to write a persuasive paper on a topic of your choice. Next, the topic you choose should be supported by a range of sources. The source should be cited under APA guidelines and the final draft should be written in APA styles. The final draft is due 1 week before the final exam. Technology revolution. The result, it means result starting में नहीं आएगा. Sometimes a million and a half years ago, some forgotten genius of the hominid world did an unexpected thing. कहते हैं 1 million and a half years ago, some forgotten genius, ऐसे genius जिनको लोग भूल गए हैं, जो सामने नहीं आए हैं, उन्होंने hominid world में एक unexpected काम किया. He or very possibly she, हमें नहीं पता वो he थे she थे, took one stone and carefully used it to shape another. उन्होंने एक स्टोन लिया और उससे दूसरे स्टोन से एक शेप बनाई. Then next, the result was a simple teardrop shaped hand axe. Result क्या निकला, उससे क्या बना, एक simple shaped hand axe बनी. But it was the world's first piece of advanced technology. लेकिन ये क्या था, वर्ल्ड का फर्स्ट पीस था जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज किया गया. देन इट वाज सो सुपीरियर, जो हैंडेक्स थी वो इतनी सुपीरियर थी टू एग्जिस्ट टूल्स दैट सून अदर्स वर फॉलोइंग द इन्वेंटर्स लीड एंड मेकिंग हैंडेक्स ऑफ देयर ओन. बहुत जल्दी ही दूसरे लोगों ने भी उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, इन्वेंटर्स ने. देन द लास्ट, eventually means as a result, whole societies
whole societies existed that seemed to do little else. फिर सोसाइटी में कुछ और लगाए और उन्होंने उसमें भी कुछ इन्वेंशंस किए और अच्छे इंडेक्स बनाने स्टार्ट कर. So sometime about 1.5 million years ago, some forgotten genius of the hominid world did an unexpected thing. He, or very possibly she, took one stone and carefully used it to shape another. The result was a simple teardrop shaped hand axe, but it was the world's first piece of advanced technology. It was so superior to existing tools that soon others were following the inventor's lead and making hand axes of their own. Eventually, whole societies existed that seemed to do little. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.